Okay, very good morning, everyone. So, we are learning about the use of decimals. Okay, use of decimals. In our previous classes, we have learned what are the uses of decimal in measuring length and the use of decimals in money. Okay, so we would like to review once again about the use of decimals in money, starting from use of decimals in money. So we have learned that 100 paise is equal to rupees 1, right? This is the most important thing. 100 paise is equal to 1 rupee. Now, if I say 1 paise is equal to how much rupee, so it will be 1 paise is equal to rupee 1 divided by 100, right? So 1 divided by 100 means it will be rupees decimal 0 1. So decimal 0 1 is for 1 paise. So if I am saying for 5 paise, so it will be rupees decimal 0 5. If I say for 7 paise, so it will be rupees decimal 0 7. If I say for rupees for 11 paise, then what? If I say for 11 paise, so then it will be rupee decimal 11 1 1, right? If I say for 25 paise, so it will be rupees decimal 2 5. Okay, so this is how if I say for 236 paise, then how much it will be, because we used to put before 2-digit decimal, so it will be rupees 2 decimal 3 6, that means 2 rupees 36 paise. So these are the uses of decimal in money or in conversion of rupees, right? After then, we have also learned what are the uses of decimals in measuring the length. So in measuring the length, two things we have learned. One is for converting into meters and another for kilometers. Okay. So in case of centimeter to meter, so first we know 100 centimeter is equal to 1 मीटर. ये 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है. So 1 centimeter will be equal to 1 divided by 100 meter. So 1 divided by 100 meter means 1 centimeter is equal to decimal 0 1 मीटर. ओके, तो इसी तरह से अगर हम पूछेंगे 9 सेंटीमीटर, सो इट विल बी डेसिमल 0 9 मीटर. अगर हम पूछेंगे 15 सेंटीमीटर, सो इट विल बी डेसिमल 1 5 मीटर. तो इसी तरह से अगर हम पूछेंगे 182 सेंटीमीटर, then it will be 1 decimal 82 meter. Why? Because before 2 digit only we used to put decimal, because यहाँ से इसके बाद में divide कर रहे हैं 100 से. So if you divide this by 100, it will be like this, right? So 100 में क्या होता है, 2 0 है, तो before 2 digit we used to put the decimal. So this is how you can use for converting centimeter into meter in case of measuring length. और इसी तरह से अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर टू किलोमीटर विल आल्सो बी सेम, बट हियर वी नो इन केस ऑफ मीटर इट इज 1000 इंस्टेड ऑफ 100 इट इज thousands, because we know 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है. तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि 1 मीटर मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1000 kilometer, right? So if you convert this, it will be decimal 0 0 1 kilometer.
So here 1 meter means decimal 001 किलोमीटर. So इस तरह से अगर हम पूछेंगे 5 मीटर बराबर हाउ मच किलोमीटर, then it will be decimal 005 किलोमीटर. इसी तरह से अगर हम पूछेंगे 32 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, देन इट विल बी डेसिमल 032 किलोमीटर. तो क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है तो हम एक ही जीरो यहाँ पे ऐड किए हैं, बिफोर 3 डिजिट ही डेसिमल होनी चाहिए. उसी तरह से अगर हम पूछते हैं 724 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, देन इट विल बी डेसिमल 724 किलोमीटर. So this is how you can convert meter into किलोमीटर. इस तरह से मीटर इंटू किलोमीटर में कन्वर्जन के लिए हमारा डेसिमल्स का यूज होता है. ठीक है. So specially now whatever we have learned is the just revision of the topic which we have learned, how to convert how to use the decimal in money and how to use the decimal in conversion of length. Now the next topic which we have is use of decimal in weight, measuring the weight. So measuring the weight also we use decimal. So use of decimal in measuring weight. Use of decimal in measuring weight. So in measuring weight, वेट का मेजरमेंट के लिए हमारा जो है डेसिमल्स का यूज कब होता है, दैट वी विल सी. ओके. टिल नाउ व्हाटएवर वी हैव लर्न, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? अभी तक जो भी पढ़ाई हुआ है, जो भी टॉपिक हुआ है, किसी को कुछ डाउट्स है तो आप जस्ट टाइप करके पूछ सकते हो. ठीक है. सो अभी हम लोग कैसे वेट का मेजरमेंट में डेसिमल का यूज करेंगे, दैट वी विल सी. सो इन केस ऑफ वेट आल्सो वी नो 1000 gram is equal to 1 kilogram, right? So 1000 gram is equal to 1 kilogram. So if you want to find for 1 gram, so this will be go and divide this side. So 1 gram will be 1 divided by 1000 kilogram, right? अब जो है इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, so just you have to put the decimal as many as digit, as many as zero in before that many much of digit. बट यहाँ पे हमारे एक ही डिजिट है तो 1 से पहले और डिजिट बढ़ाने के लिए और कितनी डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए. सो वी विल पुट 2 0 टू मेक इट 3 डिजिट एंड बिफोर दैट वी हैव टू पुट डेसिमल. सो डेसिमल 001 किलोग्राम विल बी द conversion of 1 gram. So 1 gram is equal to decimal 001 किलोग्राम. कैसे? क्योंकि 3 जीरो था, एक डिजिट ऑलरेडी है तो एक डिजिट हो गया और 2 जीरो मैंने ऐड किया एंड 1 के प्लेस पे डेसिमल दे दिया. या तो आप डिवाइड करके भी इस तरह से कर सकते हो कि अगर मान लो हमें 1000 से डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है 1000 से. सो हियर यू कैन सी क्योंकि यहाँ पे 1 है तो डेसिमल के बाद डेसिमल देंगे, देन 1 0 इट विल बी 8. After then और 2 0 चाहिए, so 2 0 we will put here, then 2 0 will come here, then it become 1000. So thousands 1 are thousands, right? तो ये प्रोसेस है नॉर्मली डिवीजन का, क्योंकि डेसिमल देने के बाद आप यहाँ पे 0 दे सकते हो, बट स्टिल दिस इज लेस देन एक 0 देके फिर भी ये लेस है तो और एक 0 देंगे तो नाउ इट इज ओके, नाउ वी कैन डिवाइड इट. सो दिस इज हाउ आल्सो यू कैन टेल कि 001 किलोग्राम इज द कन्वर्जन ऑफ दिस. सो इफ 1 ग्राम इज इक्वल टू 001 किलोग्राम, देन व्हाट विल बी फॉर 6 ग्राम? 6 ग्राम के लिए क्या होगा? डेसिमल 006 किलोग्राम, राइट? तो इसी तरह से वेरी इजीली फॉर 9 ग्राम, फॉर 11 ग्राम, फॉर 15 ग्राम, फॉर 16 ग्राम, फॉर 16 ग्राम हाउ मच इट विल बी? डेसिमल 016 किलोग्राम, राइट? So this is how very easily you can use the decimal in measuring the weight. तो weight का measurement में इसी तरह से हमारा decimals का use होता है. ठीक है. और भी आप examples ले सकते हो to convert gram into kilogram.
सो यहाँ पे 16 की जगह पे मान लो हम 154 लेते हैं. 154 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम. सो दिस विल बी डेसिमल, 3 डिजिट तो है ही, तो जीरो नहीं पुट करना है. सो 154 किलोग्राम. सो डेसिमल 154 किलोग्राम विल बी द कन्वर्जन. इसी तरह से अगर रहता है 7,304 ग्राम, सो देन इट विल बी हाउ मच. 7,000 इज देयर, सो 3 डिजिट से पहले हमें जीरो देना है. सो 7.304 kilogram will be the answer. That means 7 kilogram and 304 gram. So this is how you can convert or you can just use the decimal in the measuring of weight. तो weight के बाद हमारे पास आता है capacity, और इसके अलावा हमारे पास टुगेदर में भी रह सकता है. टुगेदर में मतलब क्या, 1 किलोग्राम एंड 1 ग्राम एंड किलोग्राम, इसमें भी साथ में भी रह सकता है. सो लेट अस सी दैट टाइप ऑफ थिंग्स आल्सो. फॉर एग्जांपल, जस्ट इंटर कन्वर्जन इट इज आस्किंग 5 kilogram and 250 gram. You have to convert into gram. So what you will do is, we know 1 kilogram is 1000 gram. So 5 kilogram will be 5000 gram. So 5000 gram plus 250 gram is here. So 250 gram. So if you add this two, you will get 5250 gram. So this will be the required conversion of kilogram and gram into ग्राम. सो बहुत ही इजीली किलोग्राम जो है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, जो ग्राम में है उसको ऐड कर देंगे. दैट विल बी द कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम एंड ग्राम टुगेदर इनटू ग्राम. ओके, एक्सेप्ट दिस, सपोज वन व्हिच वी हैव इज लाइक दिस. ये इस तरह का क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है. फॉर एग्जांपल 2 किलोग्राम एंड 5 gram. So here you have to understand कि 2 kilogram means 2000 gram plus only 5 gram here we have. So it will be 2005 gram. So this is how very easily you can use the measurement of weight in decimals. After then, which we have is used in capacity. So how can we use the decimal in measuring capacity? So that we will see. So used in capacity. कैपेसिटी का मतलब होता है जो लिक्विड चीज को मेजर करने के लिए जो चीज हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी. ओके, सो हियर वी नो आल्सो कि 1000 मिलीलीटर ml is equal to 1 liter. So 1 liter के बराबर thousands milliliter होता है. So just vice versa also you can write 1 liter is equal to 1000 milliliter. So here also if we want to find for 1 milliliter, then it will be 1 divided by 1000 liter. So if you divide this, before 3 digit decimal, 1 digit is already here and 2 more digit we have to add. So 3 digit before 3 digit decimal. So decimal 001 liter. So for 1 milliliter, if 1 milliliter it is equal to this. So for 7, 5, 6 or whatever you want to consider, for 7 milliliter it will be decimal 007 liter. इसी तरह से for 95 milliliter it will be decimal 095 liter. तो इसी तरह से और भी आप ले सकते हो, लाइक 128 milliliter. So it will be 1.28 liter. So this is how very easily 3 digit here 10 will be 028 because 3 digit से sorry here it will be like this decimal 128 because 3 digit से पहले decimal देना है ना. So 3 digit से पहले decimal देना है तो decimal 128. अगर इससे भी ज्यादा रहता है like 5794 milliliter, अगर इतना रहता है then before 3 digit decimal, so here so 5 decimal
794 liter. So this will be. So this is how very easily we can convert, or we can use the capacity in our decimals, capacity, measuring of capacity in decimals. So now let us see, it may be combined also कि liter और milliliter combined रहता है, and then suppose you are asking, it is asking to convert into milliliter, तो उस तरह का भी रह सकता है as like 7 liters and 5 मिलीलीटर. तो 7 लीटर्स का मतलब क्या हो जाएगा, 7000 मिलीलीटर. सो 7000 milliliter plus 5 ml is here, so 5 ml. So if you add this two, it will be 7005 ml. 7005 ml हो जाएगा. तो this is how very simply in case of liter and milliliter together also you can convert. Okay, so on the basis of this, now I hope you can do rest of all questions of this exercise 9.6. तो 9.6 में से अभी जो भी क्वेश्चंस है आप लोग एक बार गो थ्रू करके बताओ. अगर किसी को कुछ डाउट्स है ऑफ एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो योर होमवर्क विल बी एक्सरसाइज 9.6. आपका होमवर्क जो होगा exercise 9.6 होगा. And if anyone having any doubts in any particular questions of 9.6, quickly you can ask so that we can discuss. अगर किसी को कुछ भी है जल्दी से टाइप करके बताओ in message, type the question number. Okay, कुछ मैं यहाँ से डिस्कस कर लेता हूँ. फर्स्ट का जैसे कुछ एक क्वेश्चन है, ₹15 and 85 paise. So this you have to convert into rupees. So this it is asking convert into rupees. So here this thing you have to convert into rupees. So very easily this is already converted. So this one only you have to convert. So if you convert 85 paise into rupees, that will be, so 85 paise in rupees if you convert, then before two digits just you will put the decimal. So rupees decimal 85 will be the answer. And if you combine these two, so therefore rupees 15 and 85 paise will be equal to rupees 15.85. So this will be the required answer, 15.85. And this is how very easily you can convert all the questions of first, second, third and fourth. Okay, let's moving to the second question which we have. Second question में बोला जा रहा है, convert the following into meters. So second question is convert the following into meters. आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना है. Suppose I am taking the third one. Third one is 23 meter and 48 centimeter. So this you have to convert into centimeter. Sorry, this you have to convert into meter only. So this centimeter first we will convert into meter. So 48 centimeter will be decimal 48 meter, right? So now if you add these two, it will be 23.48 meter. So therefore 23 meter 48 centimeter is equal to 23.48 meter. So just you have to combine this, and before that you have to put the decimal sign. So that's all about
second one. So rest of all questions of second, I hope you can do 22.48, 22.48, 23.48 na, 23.48. Okay, next what we have is third question wherein it is asking about converting into kilograms. तो kilograms में convert करना है. Third question is you have to convert into kilograms. So you have to convert into kilograms. So suppose I am taking the second one now, which we have 229 gram. So very easily we know that how many gram is convert into kilogram. So you have to convert into kilogram. So you know how many gram is equal to 1 kilogram, and this is how you can convert this also, because we have learned that 1 gram is equal to decimal 001 kilogram, right? This we have learned. So in case of 229 gram, it will be multiplied by that. So this will be decimal 229 gram. Okay, so very easily this is how you can do. Let us see the fourth question which we have of third. So fourth question is 32 kilogram and 242 kilogram. So this much of gram, 242 gram. So this much of gram and this much of kilogram you have to convert into kilogram. So this is nothing, this is already converted, so you don't need to convert. So this much only you have to convert, wherein before 3 digit the decimal will be there. So that directly you can write 32 decimal 242 gram. So this will be the, this much of kilogram. This will be the conversion of gram into kilogram, and this is how you can do the rest of all question of third one, and in the same way we'll do for fourth also. So let us do one questions from fourth also. So convert into now convert into liters. So liters. So suppose it is asking for second one I am taking, or first one I am taking, wherein it is asking for 50 ml. So 50 ml into liter you have to convert. So in milliliter we have learned you have to put the decimal before 3 digit, but here we have only 2 digit. So we'll put 0 here. So 050. So decimal 050 liter. So decimal 050 liters will be the required conversion. In the same way, if we do for fourth question is asking about, okay, this is only the fourth one, and this is how you can do. And the third one or fourth one, if we do, then it is 48 liters and 236 milliliter. So here liter you don't need to do anything with this. You just need to convert this milliliter, wherein before 3 digit you have to put the decimal. So here it will be 48 decimal 236 liters. So very easily this is how you can convert liters and milliliter together into the liters. Okay. So till now, if anyone having any doubts, you can ask. Rest we will discuss in our next class. Okay. Thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye.